अखिल विश्व में एक बार फिर उन्नत ध्वज भगवा डोले। अखिल विश्व में एक बार फिर आर्य धर्म की जय बोले। वेदों के अनुशीलन से हम आविष्कार नित नए करें। दुनिया का मानव भारत का आराधन और नमन करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। जग अपना उद्धार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष करे, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्, कृण्वन्तो विश्वमार्यम्। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक साथ उच्चार करे, हम ऐसा व्यवहार करें। एक मंत्र का घोष। सबको सादर नमस्ते जी। On behalf of Pratinidhi Sabha America, it is my distinct pleasure and honor to welcome you all to the Saturday morning Vedic Satsang and Agnihotra services hosted by Sabha. I graciously welcome all of your virtual presence. Today, our guest Acharya ji is Acharya Varun ji. He is joining us from Kenya, East Africa. He has been giving a series of lectures on pravachans on Nyaya Darshan. He will continue those today after the Agnihotra. So may I welcome Adaniya Acharya Varun ji. धन्यवाद भुवनेश जी, बहुत बहुत। सभी सम्माननीय आर्यगणों का इस आज के साप्ताहिक सत्संग में हार्दिक स्वागत है। सबको प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक नमस्ते। आइए हम अपना आज का यज्ञ प्रीति पूर्वक ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर आरंभ करें। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक और पूर्ण रूप से अपने मन को एकाग्र कर उस परब्रह्म परमेश्वर पर, जिसने इस संपूर्ण संसार को धारण किया हुआ है और संपूर्ण संसार को चला रहा है, उस परब्रह्म के लिए, परमेश्वर के लिए, परमात्मा के लिए हम अत्यंत प्रीतिपूर्वक आज का अपना साप्ताहिक सत्संग आरंभ करते हैं। 3 बार लंबा गहरा श्वास लेकर ओम की पवित्र ध्वनि का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लीजिए। पुनः ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालने कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए अब हम सभी मिलकर ब्रह्म यज्ञ अर्थात वह कर्म जो हमें ईश्वर की ओर उन्मुख करता है, ईश्वर से हमारा संबंध, ईश्वर की उपासना, ईश्वर का सम्यक ध्यान ही है संध्या अथवा ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से हम अपने चित्त को, अपने मन को बाहर के सारे विषयों से हटाकर केवल मात्र उस परमेश्वर सच्चित आनंद स्वरूप निर्विकार उस परमेश्वर की ऊपर ही एकाग्र करते हैं, जिससे कि उसके दिव्य गुण, उसके हमारे अंदर उसके दिव्य ज्ञान के प्रकाश का अवतरण हो और हमारा जीवन भी दिव्य हो। इसी भावना से, इसी एस्पिरेशन से हम अपना ब्रह्म यज्ञ आरंभ करते हैं। अथ ब्रह्म यज्ञः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुः चक्षुः, ओम श्रोत्रं श्रोत्रम्, ओम नाभिः, ओम हृदयम्, ओम कंठः, ओम शिरः, ओम बाहुभ्यां यशोबलम्, ओम करतलकरपृष्ठे, ओम भूः पुनातु शिरसि, ओम भुवः पुनातु नेत्रयोः, ओम स्वः पुनातु कंठे, ओम महः पुनातु हृदये, ओम जनः पुनातु नाभ्याम्,
ॐ तपः पुनातु पादयोः। ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि। ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। ॐ भुः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। ॐ ऋतं च सत्यं चाभिधात्तपसोऽध्यजायत। ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्। दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः। ॐ शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिरस्तिरश्चिराजीरक्षिता पितर ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ प्रतीचीदिग्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकुरक्षिता अन्नमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उदीचीदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता विरुध ईशवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः। ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु।
योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उद्वयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम् देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम्। ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा इति ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ के उपरांत अब हम 8 मंत्रों से ईश्वर की स्तुति अर्थात वी विल प्रेज द ऑलमाइटी परमेश्वर, वी विल प्रेज all his divine attributes, all his divine aspects, his divine qualities, which we must imbibe, we must aspire for, and we will contemplate on those divine qualities, that divine power, that knowledge, the highest knowledge, the highest truth, the highest entity existence we aspire, we invoke, and we try to be able to make ourselves receptive while chanting Ishwar Stuti Prarthana Upasana Mantra atha Ishwar Stuti Prarthana Upasana Mantraha। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम।
ॐ य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छाया अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजापते नत्वदेतानिन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानाच्चितीये धामन्नध्यैरयन्त। ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। Just close your eyes. We will pray we will gather our emotions, our भाव। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर, हम आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं अपने हृदयों में प्रार्थना लेकर, शुद्धता की, पवित्रता की, मंगल की। हमारे मन के अज्ञान को दूर कर आप अपने दिव्य ज्ञान की ज्योति को प्रतिष्ठित कीजिए। हमारे हृदयों में अपने प्रति अपार असीम निष्काम भक्ति को जागृत कीजिए। हमारे प्राणों को शुद्ध कर उसमें अपनी दिव्य शक्ति को संचारित कीजिए। हमारे शरीर में सभी रोगों को नष्ट कर अपनी आरोग्य शक्ति को स्थापित कीजिए। हे जगत के पालक जगदीश्वर, आप हमें श्रेष्ठ कर्मों के करने के योग्य बनाएं। श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म एवं श्रेष्ठ भावों से हमें युक्त करें। यही आपसे प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। लास्ट टाइम, गत सप्ताह हमने स्वस्ति वाचन के 16, 17 और 18 मंत्र, 3 मंत्रों का, 3 ऋचाओं का पाठ किया था। टुडे वी विल रिसाइट फ्रॉम स्वस्ति वाचन एंड शांतिकरणम मंत्र संख्या 19, 20, 21 फ्रॉम स्वस्ति वाचन एंड शांतिकरणम। अथ स्वस्ति वाचनम। ओम अरिष्टः समर्तो विश्व एधते प्रप्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि
यमादित्यासो नयता सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्वस्तये यं देवासो अवथ वाजसातौ यं शूरसाता मरुतो हिते धने प्रातर्यवाणं रथमिन्द्रसानसिं ऋष्यन्तमारुहेमा स्वस्तये स्वस्ति नः पथ्यासु धन्वसु सप्त्यप्सु वृजने स्वर्वति स्वस्ति नः पुत्रकृथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दधातन इति स्वस्ति वाचनम। शांतिकरणम के 19, 20 और 21 मंत्र तक का पाठ करेंगे। अथ शांतिकरणम। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे किण्वन्ति विदथेषु धीराः यद पूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इति शांतिकरणम। Now I request all the yajmans to take few drops of water on the palm of your right hand to do संकल्प पाठ। संकल्प पाठ करने के लिए अपने दाहिने हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए on your right hand palm and you will repeat after me please. ओम आवसो सदने सीद ओम तत्सत अद्य विक्रम संवत्सरे आदित्यस्य दक्षिणायने ग्रीष्म ऋतौ श्रावण मासे चतुर्थ्यां तिथौ शनिवासरे अत्र अहम देवयज्ञ कर्म करणाय भवन्तं ऋत्विक रूपेण वृणे। प्लीज अपना जल छोड़ दीजिए नीचे। अब 3 बार सभी यज्ञवेदी के चारों ओर बैठे हुए यजमानगण और सहायक यजमानगण आचमन करेंगे। टेक few drops of water on the palm of your right hand and after each mantra kindly sip the water, drink the water. अथ आचमन मंत्राः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। सेकंड टाइम। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। थर्ड टाइम। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीशयतां स्वाहा। हाथ धो लीजिए थोड़ा। अब टेक few drops of water on the palm of your left hand for अंग स्पर्श। अपने पूरे शरीर की इंद्रियों और प्राणों को शुद्ध पवित्र करने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए from right to left different body parts। ओम वांगम आस्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु।
ओम बाहोर्मे बलमस्तु, ओम उर्वोर्म ओजो अस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। Now please light Deepak, the lamp in front of you. Om Bhurbhuvah Swaha। अब यज्ञ कुंड में अग्नि को प्रतिष्ठित करेंगे। Take camphor or whatever you have to establish fire in the Havan Kund. Om Bhurbhuvah Swardyoriv Bhumna Prithvi Varimna Tasyaste Prithvi Devayajani पृष्ठे अग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे। अग्नि को यज्ञ कुंड में प्रतिष्ठित कर दीजिए। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजे थामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। थोड़ा सा घी समिधाओं पर पोर कर दीजिए, जिससे समिधाएं अग्नि प्रज्वलित हो जाए समिधाओं में अच्छी प्रकार से। अब 3 समिधाएं घी में तृप्त कर लीजिए। काइंडली डिप 3 wood sticks samidhas into the ghee, and after swaha please offer each samidha after swaha. ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना द्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नवमा। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोर्धयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जात वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्नममा। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विष्ठय स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्नममा। अब 5 times ghee oblations of ghee with swaha. Om ayanta idma atma jata vedaste nedhyasva vardhasva cheddavardhaya चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्ना द्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्नममा।
ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब जल सिंचन करेंगे, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर। फर्स्ट opposite in the east direction, opposite to the यजमान। ओम अदिते अनुमन्यस्व। अब जिधर यजमान बैठे हैं मुख्य, ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब यजमान के लेफ्ट साइड में नॉर्थ, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब मंत्र के पश्चात यजमान अपने राइट साइड में अर्थात नॉर्थ डायरेक्शन में से स्टार्ट करेंगे और चारों ओर स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर करेंगे, जल सिंचन। ओम देव सविता प्रसूव यज्ञं प्रसूव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। अब 11 वाज्य भाग आहुति, 4 oblations of ghee in a line. First on the left side in the Havan Kund, north. Second on the right side, south, and 2 in the center in a line. Om Agnaye Swaha Idam Agnaye Idanna Mama. Om Somaya Swaha Idam Somaya Idanna Mama. Om Prajapataye Swaha Idam Prajapataye Idanna Mama. Om Indraya Swaha Idam Indraya Idanna Mama. Now 4 oblations, व्याहृति आहूतियां, only with ghee, केवल घी से। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादित्येभ्यः इदन्न मम। अब स्विष्टकृत आहुति, प्रसाद की आहुति, मीठे की आहुति। ओम यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्योनमिहाकरम् अग्निष्टत् शुष्कृत विद्यात् सर्वं शिष्टं सुहुतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहुताहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम। मुख्य यजमान घी की स्पून में ही स्विष्टकृत आहुति दें। अब एक मौन आहुति, घी की केवल, ओनली घी। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। अब प्रातःकालीन सायंकालीन आहुति देंगे तो आप घी और सामग्री साथ में।
ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषशेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा। इदं वायवे अपानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब हम समस्त आर्य परिवारों के लिए मंगल कामना के लिए आरोग्य के लिए आहुतियां देंगे, सभी परिवार गणों के लिए। ओम स्वस्ति मात्र उत पित्रेण अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु ज्योगेव दृशेम सूर्यं स्वाहा। ओम योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व आवयं प्याशिषीमहि गोभिरश्वहि प्रजया पशुभिर्गृहैधनेन स्वाहा। ओम जीवास्थ जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम उपजीवास्थोपजिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम संजीवास्थ जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम जीवलास्थ जिव्यासं सर्वमायुर्जिव्यासं स्वाहा। ओम वर्च आदेहि मे तन्वांसः ओजो वयो बलम्
इंद्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रतिगृह्णामि शतशारदाय स्वाहा। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव दित्वाति मृत्युमेति न अन्यः पन्था विद्यते अयनाय स्वाहा। ओम कामो धीरो अमृतः स्वयं भूरसेन तृप्तो न कुतश्च नो न तमेव विद्वान् विभाय मृत्योरात्मानं धीरम् अजरं युवानं स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्म वर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। 3 गायत्री मंत्रों से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। 3 पूर्णाहुति देकर अपने देव यज्ञ को हम पूर्ण करेंगे। 3 बार पूर्णाहुति देकर ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब हम सभी मिलकर श्रद्धा से भक्ति भाव में लीन होकर यज्ञ प्रार्थना का गायन करेंगे। पूजनीय प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोलें ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें। अश्वमेधाधिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दें संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर जीव धारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, इदन्न मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे,
नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। अब हम सभी यजमान गणों को यजमानों को श्रेष्ठ यजमानों को आशीर्वाद देंगे आशीर्वचन से। अगर कोई घर में यजमानों के माता पिता या एल्डरली हैं, वो उनको जल से या पुष्पों से आशीर्वाद दे सकते हैं। जल से मेरे साथ बोलेंगे, ओम सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सफलाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम पूर्णाः सन्तु यजमानस्य कामाः। ओम सौभाग्यमस्तु। ओम कल्याणमस्तु। ओम आरोग्यमस्तु। ओम शुभं भवतु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव। पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही। जल को आप यजमानों पर छिड़क दीजिए, उनको आशीर्वचन देकर। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। बहुत ही आनंद पूर्वक आपने अग्निहोत्र संपन्न करवाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Once again, on behalf of Arya Sabha, I welcome you all to the Saturday morning services. For all those individuals and families celebrating, commemorating any special events, our heartiest greetings are extended. So before I invite for today's bhajan, I do want to make a couple announcements up front, program announcements. Of course, after the bhajan, we'll have Acharya ji's continued pravachan on the series of Nyaya Darshan. Next weekend, as you all know, we will all be in Houston for the 33rd Arya Havan-Satsang. That is starting the 27th all the way through Sunday. So due to that program, we will not have our Havan on normal time here on Saturday morning, but we will be sharing a special link where the Havan on Sunday morning will be live from Arya Samaj Greater Houston. That is the concluding session of the 33rd Arya Mahasammelan. So we encourage you all, if you're not at the Sammelan, to join us during the Havan. It will, I believe the timing will start a little bit earlier. Houston time will be, I'm trying to check the agenda here, sorry, probably at 8:30 a.m., which is 9:30 a.m. Central Time, right? So we'll send the link, but certainly I'm really hoping most of you to seeing some of you in Houston.
So that is the second announcement. We'll continue our Wednesday class, but then again, no program on next Saturday, but Sunday morning link will be published. And then after the week later, we'll publish our new revised agenda for moving forward. We'll definitely have satsang on the Saturday moving forward, and then we'll announce the schedule for all the rest of the classes as well. So any questions, please do let me know, reach out to Vishwaji or put something in the group. So at this time, I'd like to request Vishwaji for a bhajan. Am I audible? Namaste ji. Ji. भगवंत तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही अरमान हो, बस एक यही अरमान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही अरमान हो, बस एक यही अरमान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, और दुख में निकले आ नहीं। मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, और दुख में निकले आ नहीं। बस एक तेरा ही ध्यान हो, बस एक तेरा ही ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो, भगवंत तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान हो, बस एक यही वरदान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो, अगर पथ में हजारों विघ्न भी आए डिगाने जो, अगर चाहे सामने शैतान हो, चाहे सामने शैतान हो। मेरे प्राण भी कुर्बान हो, भगवंत तेरी आराधना मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान हो, बस एक यही वरदान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ रहे या गम रहे, दौलत रहे या ना रहे, खुशियाँ रहे चाहे गम रहे, चाहे आंधियाँ तूफान हो, चाहे आंधियाँ तूफान हो। विचलित न मेरा ध्यान हो,
भगवंत तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान हो, बस एक यही वरदान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी। तू सूर्य है मैं कमलिनी, तू चंद्र है मैं कुमुदिनी। तव कमल पथ में स्थान हो, तव कमल पथ में स्थान हो। मुक्ति ही मेरी शान हो, भगवंत तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान हो, बस एक यही वरदान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। तू धर्म भानु लोक में, तेरे इस दिव्य आलोक में। तू धर्म भानु लोक में, तेरे इस दिव्य आलोक में। मिटे तिमिर ज्ञान विज्ञान हो, मिटे तिमिर ज्ञान विज्ञान हो। मुक्ति में मेरा ध्यान हो, भगवंत तेरी आराधना। मेरी जिंदगी की शान हो, बस एक यही वरदान हो, बस एक यही वरदान हो। मेरी आत्मा बलवान हो, भगवंत तेरी आराधना। भगवंत तेरी आराधना। धन्यवाद। नमस्ते जी। Thank you so much, Vishuji, for such a devotional and melodious bhajan. Thank you. Appreciate your presence this morning. So many people have asked if there's going to be any Zoom sessions during the Sammelan. So only Zoom program that will happen will be the Sunday morning at Havan time. But some of the programs, probably the inaugural Saturday morning and the Friday morning sessions will be live on Arya Sandesh TV. We will publish those times when all those times we are live at the Arya Sandesh TV. So those who are not able to make it the Sammelan may be able to watch it. Post the Sammelan, about a month or so, we will try to get the videos out as well. So you can take advantage of that. So at this time, I would like to request Acharya Varun Devji for his inspiration words. He will continue his lecture series on Nyaya Darshan. Acharya ji? Yeah. आइए हम today again I got this great opportunity to be with you and contemplate and go more deeper in the understanding of Nyaya Darshan. Today we will go
more feasibility, we will try to know the feasibility of Nyaya Darshan in our today's life. If we want to find out the feasibility of anything in our life, that particular thing becomes very important in our life, whether it is social life, our personal life, our individual, our collective, or our spiritual life. So this quest, this personal quest in our intellect, in our heart, in ourselves must be intense so that we can find out the proper value or significance of something which we are trying to ponder over. So last time we tried to understand few things about Nyaya Darshan. I will just briefly go through it, then we will try to understand more deeply the value, the importance, the significance of Nyaya Darshan in our practical life. And that understanding, that deeper understanding of Nyaya Darshan will help us solving our day-to-day problem, which if we don't try to solve out or sort out, it becomes a great problem in our life, whether it is psychological, whether it is emotional, or whether it is on any trivial matter. But if we try to understand, let's start. First, today we will try to understand the definition of Nyaya, as I told you last time. So in Sanskrit, the definition of Nyaya is Pramanai Artha Parikshanam Nyaya. What does that mean? This is the definition of Nyaya, अर्थात परमाणुओं के द्वारा वस्तुओं का परीक्षण करना न्याय है. To examine with the help of pramans, the evidence, to testify the real nature of different objects is nyaya. In fact, nyaya is to understand, to get the real knowledge of different objects. And basically, we all, Arya, we all know that in the Vedas, in our all Arsh Granthas, in the Arsh scriptures, basically there are three fundamental substances which we have to get to know. The first one is, of course, the creator, the generator of this whole cosmos, the operator who is bearing this whole cosmos, and of course, who is also the destroyer, because that's why it's called God. Generator, operator, and destroyer. So that Almighty Parameshwar is the first, our focus of attention, of our awareness, of our quest, which is the root of all creation, which is the main and fundamental entity in this universe. The second is Atma or Jiva, who has embodied this mind, this life, this physical sheath in order to fulfill his destiny,
in his lifetime or lifetimes. The third substance which rishis has discovered their real nature, its real nature is Prakriti. What is Prakriti? Prakriti basically is the combination of three fundamental elements or forces, Sattva, Raj, Tam. That is called, the combination of these three is called Prakriti. And the result of Sattva is Sukh. The result of Rajogun is Dukh. And the result of the Tamogun is Andhakar, is foolishness, is blindness. So today we will try to understand what is the real meaning of Nyaya Darshan and its feasibility. Why do we need to read, to do Swadhyaya of Nyaya Darshan? Basically, if we don't have that drive within ourselves, then we will not do Swadhyaya, we will not do self-study. But self-study we will only do if we have that aspiration in ourselves, and that aspiration is within all creatures, in all human beings. Even all the creatures on this earth, in this whole cosmos, has the same tendency to get rid of all kinds of suffering. We all human beings want to not to be suffered. We all want that we always be happy. We always be in the state of everlasting bliss, everlasting delight, the eternal delight. Nobody wants to be unhappy. Nobody wants to be suffered. Nobody wants to be pathetic in his life. So when we contemplate on the meaning of this, that what is the path which I should follow so that in my whole life I become satiated. So we have to examine the nature of things with the pramanas. First of all, if we ask this question to ourselves, whether any person, any individual, any society, or any object, the material object, can fulfill this need of me, this aspiration in me, which is to get that imperishable, eternal, everlasting delight. Because this whole nature is made of mixture of different elements, and this mixture makes this nature, this Prakriti, vulnerable. Whenever there will be pleasure, of course, pain will be there. This is the contradiction is there itself in the nature. So this quest, if we try to understand that, okay, I have understood that in this life, in this whole universe, or on this whole earth, none can satiate my desires completely. So on which conclusion we reach? That this nobody, no human being and no object can satisfy me. Now, the second question, the second quest must arise within, and that is whether the Almighty, the Creator, the blissful, all blissful Parameshwar can fulfill this aspiration of everlasting delight, of this eternal delight. If I come in the contact of that entity which is in itself, there is no vikar or no fault, there is nothing which we can call is imperfect in that entity, in that existence. So of course, then the quest from within, the aspiration from within will arise in order to commune ourselves
contact ourselves with that divine entity, that we can give different names according to our bhavas. So when we find out, okay, I have understood these two things, that in this world nothing can give me that everlasting happiness, and only which has created this whole universe, which is omnipotent, omnipresent, omniscient, all blissful, can only fulfill and satiate my all aspirations. That is called Parameshwar. Now, how to get in contact with the entity, with the God, with Parameshwar? Now that is the challenge. And if we accept this challenge in our life, if we feel the need to change ourselves from within, then of course we need darshans, we need this adhyatma vidya, which we call also moksha vidya, which is called darshan also. These 6 schools of our Vedic philosophy basically is called moksha vidya or adhyatma vidya. With the help of these darshans, we can attain that moksha, arthat, that imperishable delight, that anand, which never fails us, which fulfills our whole entity, our whole existence. So then, if we have understood this question, that the Parameshwar is my aim, but this nature is the means, but not the aim, not destination, then we are on the right track. And once we are on the right track, we can make the right decisions and right implementations of what we know and what we intend to know. So first, I would like to tell you that Maharshi Gautam, who made this Nyaya Darshanam, and Maharshi Rishi Vatsyayan, who gave Bhashya commentary on Nyaya Darshanam, authentic commentary. Last time also I told you there are around 530 sutras in the Nyaya Darshan, 5 chapters, 10 ahaniks, arthat sub chapters. Ahan basically means a day. So 10 ahanik means these 10 sub chapters in 5 chapters can be read and completed if somebody has dedicated completely to reading it, to contemplate on it in 10 days. And we should not forget Maharshi Dayanandji, who gave 10 principles of Arya Samaj. The 4th principle is सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए. What does that mean? How will we do that? How will we first understand the truth, and how will we distinguish and discriminate between the truth and falsehood? That is the challenge. Only then we can accept and imbibe the truth and reject the falsehood. So this knowledge of understanding, distinguishing between the truth and false is called Nyaya, and which is systematically, methodically, systematic methodology is given in Nyaya Darshan to examine the 16 padarth, which we call padarth, 16 different elements or substances, which we will inquire into in order to get that knowledge which will enable us to distinguish between truth and falsehood. And how it will be done? Last time, all Arya, Sammanit Arya Gan, in the last pravachan or last talk, I talked about after the 16, the name of the 16 elements or substances, 16 padarths. I talked about the 2nd sutra of the Nyaya Darshanam. And it says that if we perish, if
we kill the mithya jnan in us, the false perception in ourselves, in our mind, then what will be the result of that? If we clear our mind from all the false perceptions in our mind with the help of pramanas, what will happen? मिथ्या ज्ञान के नाश से हमारे अंदर whatever doshas or faults which we have got because of mithya jnana, because of false perceptions, the untrue knowledge, we have trapped in the hands of doshas, which we call rag and dvesh. You know all of that. That rag means obsession with the pleasure and dvesh is recoil from the suffering. So when we are trapped in the hands of rag and dvesh, such kind of dveshas, in kam, krodh, lobh, moho, ahankar, in these obsessions, in these doshas, then what will happen? The result of this, it will drive us towards the sakam karma, which is called pravritti. Sakam karma means whatever we will do with selfishness, with a desire to fulfill. That is called sakam karma. The worldly desire, whatever desire it is, when we are intended to fulfill any action in our life with any desire, it is called sakam karma. And till we are entangled in the web of rag and dvesh and other all these doshas, they will always push us to do our actions, to act with some desires. And that sakam karma, that pravritti will automatically lead us towards the janma, towards the birth. Because if we are doing anything for any desire, there is karmashay which we are making, arthat, the pile of our actions, the big pile, the huge pile of different actions, we are gathering, accumulating those karmas with the desire we are doing. So that janma will again the reason of dukh in our life. So basically, if we try to understand this cycle, that mithya jnana, false perception, is the cause of doshas, of rag and dvesh, kam, krodh, lobh, moho, ahankar, whatever. This list is long. Then this doshas becoming the reason, the cause of the further effect, which is called pravritti, sakam karma. All our actions which we are doing in our mind with some kind of desires, that is called sakam karma or pravritti. And that sakam karma is forcing us, is becoming the cause of another further effect of janma, of our birth in this body, in this mind, whatever we are having in order to do the actions, speech. And furthermore, this janma is the cause of dukh. So basically, if we try to understand the system of Nyaya Darshan in the sutra, is the systematic methodology of cause and effect, which Maharshi Gautam has developed in order to get the Tat Vijnan. Basically, he says, with the help of Tat Vijnan, we will be able to eliminate all our false perception, and that false perceptions in further will eliminate all the doshas in our nature. And that doshas, when there is no dosha in our nature, in ourselves, then we will be nishkam karma. We will do nishkam karma without any desire, only for the divine, only for the Almighty Parmeshwar, not for ourselves we will do anything. And that nishkam karma will liberate us from the
this avagaman chakra, this cycle of birth, life and death. And if there is not life and death, we will be free from all the dukkhas, all the suffering in our life. So basically, the knowledge of these 16 substances or 16 elements or these 16 पदार्थ, इन 16 पदार्थों के ही ज्ञान से हमें तत्व ज्ञान संभव है, ये महर्षि गौतम हमें बता रहे हैं. Now I'm going to tell you very interesting thing. There are 4 kinds of knowledge. 4 kinds. The first kind of knowledge is mithya jnana. Mithya jnana, as I told you, the false knowledge, the false perception in our mind. For example, all of us, this is a very common understanding or phenomena that we consider ourselves as this mind, as this life, as this body. We don't know, we have not realized the Atma, our true self, our true identity. So we always consider this mind, life and body ourselves. That is called mithya jnana. If on the road in the summer you see far kind of water and you go near, it is not the water, it is only the heat waves which is reflecting on the road, which is also called mirage. That is called mithya jnana. As I told you, I mentioned last time, there is a dark room, you see a rope and you consider it as a snake and you become fearful. That is called mithya jnana. The second kind of knowledge is sanshayatmak jnana, arthat doubtful knowledge. For example, if I ask someone about rebirth, they are in doubts. They have not logically derived from the Shastra or from their understanding, from the Nyaya Pranali, from the methodology of the Nyaya. They have not reached there that they consider that we don't know we will take birth next time or not in the next life. What does that mean? They are in doubt, which is called sanshaya. Some people has doubts, whether is their soul, because there is no experience of soul, there is no realization of the soul. That's why there is doubt. And in Gita, Shri Krishna says, doubtful mind is very dangerous. It is very contagious and it kills the beauty of the soul. It kills the beauty of the values in our life, the doubtful mind. The third kind of knowledge is Shabdik Jnana, arthat the knowledge through the words only. For example, somebody told you that the mango is a very tasty fruit, but we have not tasted yet. Only we have the word knowledge, but not the knowledge through experience. So what will happen? Till we have not tasted the mango, we can think about or talk about mango, but actually we don't have the right knowledge, the correct knowledge of the mango. So till we are talking about Atma, we are talking about Prakriti, we are talking about Ishwar, Jiv Prakriti. We have the word knowledge, but till we have not in ourselves the knowledge through experience, we will be imperfect. We will not be fulfilled with that imperishable everlasting bliss. And the fourth kind of knowledge is Tattva Jnana. And what is Tattva Jnana? The knowledge, the right, the correct knowledge as it is of the 3 substances, Ishwar, Jeev and Prakriti. And till we have not attained that right knowledge through experience
of these three fundamental substances of Ishwar, Jeev and Prakriti, which means we are not able to eliminate all kind of suffering from our life and to be able to attain the imperishable eternal delight. So all respected dear Arya friends and Arya Bandhuon, Nyaya Darshan gives us that understanding, that quest, inner quest, that knowledge of Tattva-Jnana, which we call Tattva-Jnana, the correct, right understanding of substances of Ishwarji Prakriti, which at the end will give us the eternal bliss and everlasting delight and free from all sorrows. So if we want to be free from sorrows and to attain the everlasting happiness, Anand, we should read Darshans, Nyaya Darshan and all our 6 Darshans. Dhanyavad. Bahut dhanyavad, Acharya ji. So beautifully you have explained the essence and the message of Nyaya Darshan. I'm just going to summarize, and I have a question, if you wouldn't mind. I think you basically started and closed with that. The search for Tattva Gyan, that's where we need to attain, because we have false knowledge, we have doubtful knowledge, we have knowledge through words, but the goal is to get the Tattva Gyan of the 3 eternal elements, Ishwar being God, the soul and matter, of course, right? And then you explain the process of cause and effect and how some of these things lead, whether our false perception lead to doshas and all that. But there is one statement that you made that comes from Nyaya Darshan. I've heard it over and over and over again. But as a person who doesn't have this great knowledge, right? When I hear that birth, right? Like the cause of dukh is birth, right? And you can correct me if my perception is wrong, and that's where my question is. When we make that statement, it's very unsettling for me, right? Because at one point our scripture said we're supposed to do, take the worldly knowledge and do good karma. And when we do good karma, we actually feel good, right? Even if we enjoy nature, we feel good. So how does birth turn into a matter of dukh? Because dukh to me is sorrow and painful. Yes, there are dukh, but then the reverse side is there's so much pleasure in this world as well. Of course. Is that a valid dichotomy, or is there I'm sure, I'm very unlearned when it comes to all these things, but how do you explain that to a layman? Bhunesh ji, this is a very sincere quest in which you have asked in human beings, if they look into it more deeply. Basically, if we look at our life, this is, of course, full of pleasures, full of worldly pleasures through senses. Sure. But once we will get connected to that, the experience of the divine or the Parameshwar or our eternal self, once, Maharshi Dayanand Ji says once, then what will happen? This whole worldly pleasures become like futile, vain. So basically, this question, what you have asked, it is relative. Why? Because we have not tasted that eternal delight yet. And once we have tasted, that's why Rishi, this is the statement from the Rishi, not from me alone. No, of course. I'm not challenging you.
Yeah, we are only like students. We are Right, trying to right. understand. No, I understand. I think what you're trying to say is there's a higher meaning here of dukh, Yeah, right? Dukh is temporary, and so are these worldly pleasures, right? exactly, But exactly. that sukh that comes with when we connect with Ishwar, that is Yeah, eternal. It doesn't go away. I think doesn't maybe go that's away. what you're meaning. It Right. is everlasting, and also not only this is about the duration. Like when we say eternal or everlasting, in our mind it is we connect it with the time, but at the same time it is connected to the quality of the sukh, of that ananda of Ishwar. Sure. What means what we are experiencing through our senses, and once we attain the samadhi, or we are in that, even for the moment or blink of the moment, I'm telling the 10th part of the moment, if we are in connection with our inner self, this all seems like that taste is, it is called anirvachaniya. It is cannot be told through the words are limited. But rishis are only indicating that if you get the tattvajan, only that you can know what is the taste of that eternal delight. Wonderful, wonderful. No, it makes sense. So thank you so much, and I appreciate the discussion. I'll request you to close this session with Shantipat. Just one announcement. Again, I want to thank all our continued supporters and donors. If you have not made your annual contribution to our Pratinidhi Sabha, please do so. We appreciate all of your continued support. It is how we are able to bring all these different programs to you. Next weekend, we will be looking forward welcoming you all for the 33rd Arya Mahasammela in Houston. The Sunday morning link will be published, no Saturday morning satsang. So thank you again. Acharya ji, thank you for joining us all the way from Kenya this morning. If you would, please go ahead, Shantipat and Jai Ghosh. Dhanyawad. जी धन्यवाद. शांति पाठ. ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि. ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः. जो बोले सो अभय. वैदिक धर्म की जय. गुरुवर बिरजानंद जी की जय. युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी की जय. मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय. योगेश्वर श्री कृष्ण जी की जय. सभी संतों महात्माओं और ऋषियों की जय. आर्य समाज अमर रहे. वेद की ज्योति जलती रहे. ओम का झंडा ऊंचा रहे. किण्वंतो विश्वमार्यम. वैदिक ध्वनि. वैदिक अभिवादन. सबको सादर नमस्ते जी. धन्यवाद आचार्य जी. धन्यवाद.